ओके सो लेट्स स्टार्ट अगेन। दिस इज़ मी। अगर आपने अभी तक जो पहला वाला वीडियो नहीं देखा है, दिस इज़ अ सेकंड वीडियो ऑफ द सिलेबस ऑफ सोशियोलॉजी ऑप्शनल फॉर यूपीएससी सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन, and this is Prashant Randive. I'm a Chevening scholar selected by the Foreign Commonwealth and Development Office UK government, and this year 2025 I've done my bachelor's in sociology from Savitribai Phule Pune University in Modern College, and then I did my master's in development from Azim Premji University Bangalore, and currently I'm pursuing my MS Social Anthropology in School of Oriental and African Studies from University of London. I have a few years of experience in UPSC preparation. I've prepared, I've wrote exam. So yes, so let's come to the part 2 of the sociology syllabus explained. The only purpose of this syllabus explanation is to help you to understand that how to navigate through a syllabus. Please understand that the syllabus is very important part of your preparation journey. If you do not take it seriously, then that would be a problem. You should have a clear cut understanding of what is the syllabus of UPSC sociology optional, because if you don't have a clear cut idea in your mind that what kind of main important points and aspect of the syllabus are there, then you will not be able to connect it with whenever you're reading something, uh, uh, something in the newspaper or in any reference book. So it's always good to have a syllabus in your mind, and that's why you have to read a syllabus very repeatedly. I still remember when I used to prepare for civil services examination, my mentor used to tell us that you have to wake up and every day you have to read syllabus for 10-15 minutes. You just go through a syllabus. You every day you are bombarded with thought that in paper second there is indology, in paper second there is structural functionalism. अब आपके दिमाग में ये चलता जाएगा चलता जाएगा चलता जाएगा, एंड देन जब भी यू आर रीडिंग समथिंग इन द न्यूज़ पेपर, यू आर रीडिंग समथिंग in any of the book, anywhere you are listening something, your mind will connect it. So ये जो इंटरकनेक्शन बनाने के लिए यू मस्ट हैव अ गुड होल्ड ओवर सिलेबस. सो दैट्स वाई आपको सिलेबस की अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए. इसलिए मैंने इसको सिलेबस को और थोड़ा डीपली ब्रेक डाउन किया है, और इसलिए लास्ट वीडियो इज़ अबाउट 40-45 minutes. Now this will be very small video, but you understand that having a good grasp over syllabus is always going to give you a leverage over other students who do not. सो लेट्स स्टार्ट विद दी ए सेक्शन. अब जब सोशियोलॉजी ऑप्शनल का पार्ट 2 जो है, पेपर 2 जो है, उसमें 3 सेक्शन है. द फर्स्ट सेक्शन इज़ अबाउट इंट्रोड्यूसिंग इंडियन सोसाइटी. तो यहाँ पे आपको इंडियन सोसाइटी का इंट्रोडक्शन क्या है वो सब कुछ समझ में आएगा. ठीक है, ऑल राइट. वाई इट इज़ नॉट विजिबल, आई एम नॉट श्योर. Anyway, leave it. So I understand that introducing Indian society is here. Then we have the second part is about social structure. अब पहले में हमने क्या देखा था पहले में, सोशियोलॉजी का इमर्जेंस कैसे हुआ था, पेपर 1 में हमने देखा था. एंड देन वी स्टेट फॉर वेंट टू आफ्टर रिसर्च मेथडोलॉजी वी स्टडीड अबाउट द डिफरेंट थिंकर्स. तो यहाँ पे भी ऐसे ही है, आप इंडिया की सोसाइटी को डिफरेंट थिंकर के नज़रिए से समझोगे. और इससे पहले इसलिए जब भी आप पेपर सेकंड पढ़ने जाओगे तो पेपर जो फर्स्ट है दैट यू शुड प्रॉपरली अंडरस्टैंड व्हाट इज़ देयर एट अ कॉन्सेप्चुअल लेयर इन द पेपर. सो दैट्स वाई नाउ यू सी we are studying Indian society from the lens of Indian thinkers or different thinkers who have studied the Indian society. So that's why in India there is a methodology called as Indology. G.S. Ghurye ने ये दिया था. तो he says कि to study Indian society you have to study the text, you have to study the tradition, you have to study the values. Now there is also structural functionalism, Yemen Srinivas. Now he says how caste, kinship and village sustain the order. So अब यमन श्रीनिवास का अपना एक किताब भी है विलेज के ऊपर. देन मार्क्सिस्ट सोशियोलॉजी में आप देखोगे AR देसाई जो थे वो मार्क्सिस्ट थे. तो क्लास एंड पावर इन द कॉलोनियल एंड द पोस्ट कॉलोनियल इंडिया, तो अब इसकी बात होगी इसमें. फिर आप देखो कि कॉलोनियल रूल का इम्पैक्ट क्या हुआ था, तो हाउ इट शेप द इंडियन इकोनॉमी, लॉ, एजुकेशन, कास्ट एंड जेंडर रिलेशनशिप, विच इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट. अब इंडिया का जो नेशनलिज्म है तो उसका सोशल बैकग्राउंड क्या था, हाउ द न्यू मिडिल क्लास अराइज्ड, व्हाट वर द रिफॉर्म मूवमेंट्स,
and how is the print culture happened. So these are the just basic point that I'm putting forward, but you should understand that this list is, very big list. You have to study in depth a lot of things. Then you should understand that how the modernization of tradition is happening in the India, how old institutions are adapting with the modernity. That's a much more closer idea of M.N. Srinivas. There is a concept called as the Sanskritization as well. You can read that. Then the how the Protestant reform, the anti-caste movement, the women's movement, the peasants movement, everything is happening in India. So you just get a basic hold over what is Indian society, how it works, what are the different ways through which you can study the Indian society. So these are the basic thing. If you study, you will have a good hold over the Indian society and its traditions, culture, religion, and everything. Now you come to a social structure where you study, a different social structure in the India. For example, you study the village studies. So there are different village studies. For example, I said Srinivas has its village studies. He went to one of the village in the Madras and he studied. I think Rampura was a village. Then there is the red fields. So he says basically there is a continuity and change in the rural life. So now you have to, as a sociologist or as a student of sociology, you should understand ki bhai, how things are changing in the villages, how the continuity is there in the villages. Then you will go to agrarian culture. लैंड टेन्योर सिस्टम क्या था, ज़मींदारी सिस्टम क्या था, रैयतवारी सिस्टम क्या था, लैंड रिफॉर्म्स इन पोस्ट 1947 में क्या हुआ था. Now this part may seem to you like a part of history, but you should understand that you have to study it from the perspective of the sociology, and for that perspective you would be getting help from all these syllabus, the paper one. Without paper one, don't jump to the paper 2, because you will not be able to make sense of what you are studying, and you will not be able to distinguish between am I really studying this for sociology, or am I just getting different topics from different subject. So you have to have a sociological understanding, and that's why paper 1 is important, and then you go to paper 2. Then you will study about Indian society ka very important structure is a caste system. There is a hierarchy, there is endogamous order. Endogamous order and endogamy you must be knowing, अपनी जाति में शादी करना. Changing patterns under democracy. Now how caste is getting shaped under democracy. So there are different debates. बहुत सारे मेजर स्कॉलर्स है इसमें. G.S. Gure है, caste as a Brahminical hierarchy. Srinivas is talking about Sanskritization. Now you have to understand this concept, you have to criticize this concept as well, not just कि भाई किसी ने लिखा है तो यही. Then Louis Dumo है. Louis Dumo इंडियन थिंकर तो नहीं थे, लेकिन शी स्टडीड अबाउट इंडिया. सो प्यूरिटन पोल्यूशन है. आंद्रे बेते है, क्लास एंड क्लास कास्ट इंटरसेक्शन. एक दो और बताऊंगा. डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर वॉज सोशियोलॉजिस्ट, सो यू शुड स्टडी हिम. तो ऐसी कॉन्सेप्ट है, अनटचेबिलिटी है, ट्राइब्स है, सोशल क्लासेस है, किनशिप है, रिलीजन है. तो अगेन द सेम थिंग दैट वी वर स्टडिंग इन द पेपर 1, नाउ यू आर स्टडिंग इन द पेपर 2, बट very much rooted in the Indian society. Then you should also study about one of the very important thinker of 21st century is basically Gail Omwet. So Gail Omwet also studies about Indian society. So there will be different thinkers you will be going through. Then finally you will be studying about social change in India. अब जैसे हमने जो लास्ट इसमें देखो सोशल चेंज इन मॉडर्न सोसाइटी. नाउ वी आर स्पेसिफिकली स्टडिंग अबाउट सोशल चेंज इन इंडिया. सो ऑलवेज relate what you are studying in the paper 1 to the paper 2, and that's why you should have a good hold over syllabus. मैं repeatedly बता रहा हूँ, don't ever think that you are getting through exam without reading a syllabus. Reading a syllabus is a very essential part of your journey. If you do not read a syllabus, then that is gonna create a problem for you. Let's go for this, the part C, social change in India. Now you should understand ki what were the visions of social change in India, like how was the development state was getting shaped, what were the different planning commissions, how economy was getting shaped, what kind of planning was there happening in India, what is Nehruvian socialism. Then law and the constitution and how it was changing society. So how law and constitution was a tool for equality, reservation, abolition of untouchability, and there are so many other things that were very important that has brought to us, that are brought to the most marginalized communities and marginalized sections and the individuals and identity in the India
through the law and the constitution, which has impacted it positively, which has given a mobility to these classes, which has brought a change. So you should study. Even same we are studying education, but now we are studying how education is a tool of social change, agent of social change, but in terms of India again. So you are studying modernization, literacy, mobility, how it is happening, rural development. So you will be studying different schemes as well as the process of rural development. What are the agents, what are the processes that facilitate the development that is happening in the rural India. So you will see that, community development program, integrated rural development program, then Manrega, then different cooperatives, and so many other things. Green revolution, you will be studying agricultural productivity, regional inequalities, and how agriculture and the relation of labor, productivity, regional inequalities, that is there. Then you will be studying rural labor and the bondage. So how in India still there is a feudalism, migration from villages to cities, how it is happening. These are most important topic, because you see in India still there is a bonded labor going on, and you should be able to study and appreciate the nuances of this kind of systems that exist. And that's why दी फ्यूडल रिलेशनशिप हो, माइग्रेशन सिटी में हो, ये सारी चीज़ें बहुत मैटर करती है. उसके बाद इंडस्ट्रियलाइजेशन आता है, हाउ इंडस्ट्रियलाइजेशन एंड अर्बनाइजेशन इज शेपिंग ब्रिंगिंग सोशल चेंज. नया वर्किंग क्लास कैसे बन रहा है, स्लम्स इनफॉर्मल सेक्टर्स कैसे जन्म ले रहा है. तो ये ओला ऊबर का भी एक नया इनफॉर्मल सेक्टर बन रहा है, तो आप उसको भी देखना पड़ेगा. पॉलिटिक्स इन सोसाइटी, उसमें इलेक्ट्रल डेमोक्रेसी से कैसे सोशल चेंज आता है, रीजनलिज्म में क्या चीज़ें हो रही है, सेकुलरिज्म कैसे बढ़ रहा है, या फिर श्रिंक भी हो रहा है बोल सकते हो. ठीक है. सोशल मूवमेंट, सोशल मूवमेंट में दलितों की मूवमेंट हो सकती है, महिलाओं की मूवमेंट हो सकती है, पेजेंट माने शेतकरी जिसको बोलते हैं, फार्मर्स की मूवमेंट हो सकती है, इन्वायरमेंटल हो सकती है, अलग अलग इथनिक मूवमेंट्स हो सकते हैं. पॉपुलेशन डायनेमिक्स में फर्टिलिटी, मॉर्टेलिटी, माइग्रेशन, एजिंग, हेल्थ, ऑल दिस स्टफ दैट मैटर्स, आपको इसको पढ़ना है. और फाइनली इंडिया के डेवलपमेंटल चैलेंजेस, सोशल चेंज में चैलेंजेस क्या क्या है. पावर्टी है, इनइक्वालिटी है, कास्ट कन्फ्लिक्ट है, कम्युनलिज्म है, जेंडर वायलेंस, डिस्प्लेसमेंट, इकोलॉजिकल क्राइसिस. सो ऑल दिस थिंग्स दैट मैटर्स फॉर अस एज अ कंट्री. और इसीलिए वेन एवर यू आर स्टडिंग सोशियोलॉजी, यू शुड अंडरस्टैंड द एप्लीकेशन ऑफ दिस कॉन्सेप्ट ऑन द इंडियन सोसाइटी. देखो, अगर इफ़ यू डू दिस पार्ट, द फर्स्ट पार्ट ऑफ फर्स्ट 10 chapters of the paper 1, then you will be able to work with paper 2, because paper 1 is actually you have to use it as application on the Indian society. और थोड़े बहुत थिंकर्स और सोशल स्ट्रक्चर इंडिया का है, उसके कंटेक्स्ट में हमको पढ़ना है, तो यू विल बी एबल टू डू दैट. आई होप दैट वॉज हेल्पफुल. हम लोग अगले वीडियो में मिलेंगे, थोड़ा सा और डिटेल में हम लोग अभी सिलेबस बाय सिलेबस थोड़े थोड़े कॉन्सेप्ट को डिस्कस करते जाएंगे. आई विल ट्राई टू हेल्प यू. अगर पसंद आया हो तो प्लीज़ डू शेयर विथ योर फ्रेंड्स, फैमिलीज़, जो भी लोग प्रिपेयर कर रहे हैं. प्रशांत मोहन चैनल को सब्सक्राइब करिए और कमेंट सेक्शन में बताइए इफ़ यू नीड एनीथिंग, इफ़ यू रिक्वायर एनी स्पेसिफिक वीडियो ऑन सोशियोलॉजी और सोशियोलॉजी किसी कॉन्सेप्ट के बारे में. आई विल बी हैप्पी टू मेक वीडियो और create a class for that. Thank you.